पजोमात्रे विद्यालय यूट्यूब चॅनलवर आपणा सर्वांचे स्वागत. रयत शिक्षण संस्था साताऱ्याच्या कर्मवीर विद्याप्रबोधिनी अंतर्गत रायगड विभागीय वक्तृत्व स्पर्धा शुक्रवार दिनांक 20/2/2024 रोजी तुकाराम हरी वाजेकर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय फुंडे उरण येथे संपन्न झाल्या. या स्पर्धेमध्ये 3 गटातील या विद्यालयातील 13 विद्यार्थी सहभागी झालेले होते. या स्पर्धेमध्ये द्वितीय गटातील इंग्रजी भाषेतील कुमारी झोया अन्सारी हिला तृतीय क्रमांकाचे पारितोषिक प्राप्त झाले. विद्यालयाच्या मुख्याध्यापिका सौ मोहिते मॅडम यांच्या हस्ते प्रमाणपत्र व रोख पारितोषिक आज दिनांक 21/12/2023 रोजी तिला देण्यात आले. तसेच स्पर्धेत सादर केलेले भाषण सर्व विद्यार्थ्यांसमवेत कुमारी झोया अन्सारी 10वी आणि रक्षा बुधवंत इयत्ता 6वी यांनी सादर केले. सदरचा व्हिडिओ आवडल्यास आपल्या मित्रांना शेअर करून चॅनल सबस्क्राईब करावे, म्हणजेच यापुढील विद्यालयातील उपक्रम आपणापुढे पोहोचतील. धन्यवाद. They are searching to get loved by someone, to be recognized by someone, to be appreciated words by someone, to really what that they are a great person. You know, we should always remember that our life is very short. We all are aging day by day. Or I can say, we are losing every mood when it comes to its end and then another day starts. So it's just a matter of time, how we look at our life. And now it's not so anymore. We must value our time. Value each and every second of our life. Take time to love. Take time to live. Enjoy and spread happiness. Like Veeramgiri Baba Hardeo Singh says, this life is very precious. This life is very precious. Each beat we are taking is precious. We have to value this. We don't know at which moment of our life suddenly there will be silence. So live it with love, peace, and make it joyful. This life is all about our vision. How we see it, how we live our life, and what our value, or you can live it happily if you are still a God. Here is the fact that you cannot buy time, even if you have billions of dollars. Live it in moment right now. You can make money, you can make more money, or you can get another high-income job, and that is good too. But it doesn't mean that you leave your job and enjoy. But I just want to say that enjoy with what you have. Enjoy in every situation. This life is not easy, I agree, but it's not that difficult as much as I think about it. And if you want happiness, so you have to give happiness to others, your friends, family, and also the people who are caring for someone. The more you inspire, the more you will give. Don't wait for any occasion, or don't wait for any festival birthday. You also have a life, and that is a big reason to celebrate or to enjoy. So don't want your life to start an occasion and enjoy every moment, because we don't know how much our time is left over here. So don't wait for any occasion. Just say to yourself that I am alive, and my life is more valuable than any occasion. So why not you get celebrated right now? Why not you get a delicious food and enjoy right now? Why not you get smile right now? Why not you can look yourself and thank God for this beautiful life? Now is the day, live it now. The family that needs you, spend more time now. The money you thought to give it now. The people you thought to mentor, do it now. If you love someone, tell him or her now. Just if you want to say sorry to someone, apologize now. If you want to say thank you to someone, say it now. Just appreciate the person you love. Then what is smile? Every time love is there, it seems to say now. But to complete your life, just love it. Life is a plant that you will soil. In fact, the plant is whoever steals the soil, it is as well to steal all that. And whoever keeps it alive, it is as well to keep alive all that. And promise it. For the Lord, take delight in His people, to come to humble with victory and over the
situation with it. And one person who is not well is a hospitalized way. You cannot say that he's sick or something, but instead to boost my energy and say to you with smile face that, hey my friend, this pain is temporary and it's not at all, and I will follow you because God is with me when my heart hurts and I'm happy. So this is what I say. Joyfulness, happiness, and teaches us what life is. So smile and let your thoughts be quiet and not to bring your life and be so much. Smile even in tough times. Smile even in tough times. This is called an extraordinary life. At last, just love yourself, love everyone, stay calm, be joyful, and love your life. Thank you so much. आजकल लड़कियों की पढ़ाई को बहुत महत्व दिया जाता है, पर अभी भी कई जगह लड़कियों को पढ़ाते देखते हैं लड़की तो है ज्यादा तो पढ़ाया कर उन्हें कौन समझाए कि बेटी पढ़ेगी तो पूरा परिवार पढ़ेगा। बेटी सिर्फ अपने माता पिता का ही नहीं बल्कि देश का गर्व है। इसलिए मैं कहती हूँ ना, बेटी को चलना नहीं पढ़ना सिखाओ, बेटी को चलना नहीं पढ़ना सिखाओ। चलना तो वो खुद सीखेगी, चलना तो वो खुद सीखेगी और चलेगी कैसे, सीखने के मंजिल पर चलेगी, सीखने के मंजिल पर चलेगी। भारतीय संस्कृति में महिलाओं को बहुत सम्मान दिया जाता है, उनकी देवी समान पूजा की जाती है और हर एक समृद्ध घर के पीछे एक महिला का ही हाथ होता है। आजकल सारे क्षेत्र में महिलाओं की मर्यादा बढ़ती जा रही है। आज हर लड़के को ताने मारते हैं, अगर वो लड़की हो तो कितनी मोटी हो, पतली हो तो कितनी पतली हो, गोरी हो तो कितनी गोरी हो, काली हो तो कितनी काली हो, ज्यादा मोटी हो बड़ी, कम मोटी हो मतलब। पर उन्हें कौन समझाएगा कि लड़कियों के रूप रंग से नहीं, उनके कर्तव्यों से उन्हें समझा जाता है। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीप चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक समुद्र बनाने के लिए, पर स्त्री अकेली ही काफी एक गर्भस्वर बनाने के लिए, गर्भस्वर बनाने के लिए। स्त्री एक स्त्री ही नहीं होती, वो हर एक रूप में होती है। जैसे कभी माँ बनकर, कभी बहन बनकर, कभी पत्नी बनकर एक आदमी को सही राह दिखाती है। नारी को कभी कम मत समझना, नारी को कभी कम मत समझना, वो आपका हर समय हर वक्त पर साथ निभाती है, हर समय हर वक्त पर आपका साथ निभाती है। सबको स्त्री शिक्षण की पढ़ाई का महत्व पता होना चाहिए। कहते हैं ना, अगर एक आदमी को शिक्षित किया जाए तो सिर्फ आदमी ही शिक्षित होता है, पर अगर एक महिला को शिक्षित किया जाए तो पूरी पीढ़ी शिक्षित होती है। जब बेटियां छोटी होती है, कई जगह पे उसका पढ़ने का मन होता है तो कहते हैं कि तू जो कर